This lecture is about the key points of chapter number 3, class 10, organic chemistry. So we can say, though the first key point is, according to the vital force theory, plants and animals are formed due to the supernatural force. तो इस वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक प्लांट्स और एनिमल्स ये सुपर नेचुरल फोर्स की वजह से हमारे वजूद में आते हैं यानी कि बनते हैं. Second one is organic chemistry is the chemistry of hydrocarbons and their derivatives. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो क्या चीज़ है, वो यानी इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं और इनकी जो डेरिवेटिव्स होती है उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. Organic compounds are those compounds which are based on carbon. Organic compounds जो होते हैं वो compounds होते हैं जो कार्बन के ऊपर बेस इनका होता है, यानी उसके अंदर कार्बन एक बुनियादी एलिमेंट होता है. Organic compounds that contain only hydrogens and carbons are called hydrocarbons. वो organic compounds जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन्स होते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. यानी हाइड्रोकार्बन्स क्या चीज़ है, हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं. द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, यानी वो फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर जो होते हैं, यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला. और कैसे है, नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स around the carbon atom present in a molecule of a compound. तो स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसमें हम जो कंपाउंड का होता है उसमें हम जो एटम्स होते हैं उनको हम अरेंज करते हैं, यानी कार्बन एटम के इर्द गिर्द जो ना हम कार्बन एटम्स के इर्द गिर्द हम हाइड्रोजन्स यानी जो डिफरेंट एटम्स होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट है कार्बन के इर्द गिर्द उसको हम स्ट्रक्चर फार्मूला के ज़रिए से जाहिर करते हैं. यानी स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या होता है, उसमें जो है कार्बन जो एटम है उसके इर्द गिर्द जो है ना जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट है उसको हम स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं. Organic compounds having the same molecular formula but different structure formula are called isomers of each other. यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन वो स्ट्रक्चर फार्मूला के लिहाज से डिफरेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स. तो आइसोमर्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं आइसोमर्स. Saturated hydrocarbons are hydrocarbons in which each carbon atom in the molecule form 4 single covalent bonds with other atoms. तो saturated hydrocarbons वो हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें जो हर एक कार्बन होते हैं वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं बाकी एटम्स के साथ. तो unsaturated hydrocarbons are hydrocarbons in which carbon atoms have at least one multiple bond. So unsaturated वो कंपाउंड होते हैं जिसमें यानी वो हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें कार्बन्स में यानी एक बॉन्ड की बजाय मल्टीपल बॉन्ड होता है. इसके अलावा जो क्लोज चेन cyclic organic compounds are those compounds in which carbon atoms are linked together
and form a closed chain structure, a ring. तो क्लोज चेन जो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो लिंक्ड होते हैं आपस में, और ये क्लोज चेन या स्ट्रक्चर रिंग बनाते हैं, तो उसको हम कहेंगे क्लोज चेन। इसके अलावा जो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक organic compounds are those organic compounds which are in close chains or ring structure. The ring is composed of only one carbon atoms. तो इन्हीं होमोसाइक्लिक जो organic कार्बोनिक compounds है, ये वो organic compounds है you can say which are close, which are in a close chain, जो close chain ring structure में होते हैं, और जो रिंग होते हैं उनमें सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर एटम्स अदर देन कार्बन, such as sulfur, oxygen, nitrogens in the rings or cycles are called heterocyclic organic compounds. यानी फ्यूरेन, कैफीन एंड पायरिडीन, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन जो एटम है कार्बन एटम्स है, उसके अलावा और भी एटम्स होते हैं। यानी कार्बन के अलावा जो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में और एटम्स भी पाए जाते हो, जैसे कि सल्फर है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, तो एक रिंग की सूरत में और साइकिल फॉर्म में, तो उसको हम कहेंगे कि हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो फ्यूरेन है, टाइफिन एंड पैराडीन, ये क्या है ये मतलब heterocyclic organic compounds है। तो homocyclic series is a series of organic compounds that have similar structure, feature but differ from adjacent member by CH2 group. तो homocyclic we can say that homologous series वो series of organic compounds है यानी जिसमें जो सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर होते हैं, लेकिन ये एडजेसेंट जो मेंबर्स हैं उनसे CH2 ग्रुप के जरिए से मुख्तलिफ होते हैं। अल्काइल रेडिकल्स आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम एन अल्केन मॉलिक्यूल। तो अल्काइल रेडिकल्स क्या चीज़ है? तो अल्काइल रेडिकल्स ये ग्रुप्स ऑफ एटम्स होते हैं जो जब ये कब बनती है, तब बनती है जब एक हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव करें अल्केन से, तो फिर ये क्या बनते हैं? अल्काइल रेडिकल बनते हैं। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप is an atom or group of atoms that is responsible for the specific properties of an organic compound. तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है, मखसूस किस्म की जो खसूसियात है, वो फंक्शनल ग्रुप की इनका निसार होता है। यानी अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है हम मालूम करना चाहें, तो उसका फंक्शनल ग्रुप हमें पहले मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है उनका इंहिसार फंक्शनल ग्रुप पे होता है। और इसके अलावा दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि द रिएक्टिव portion of the molecules containing the other elements is called the functional group. यानी फंक्शनल ग्रुप एक और भी है कि ये क्या होता है, ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल का रिएक्टिव पार्ट होता है। So you can say
let's come towards exercise. So choose the correct answer. This condensed structural formula of butane is, you can say, this is the condensed formula, so in which there is shown no bond. So you can say, and this is the condensed formula. So you can say this is the condensed formula, which is the correct answer. So second is the compound C6H12 must have all single bonds, at least one double bond, at least one triple bond, all double bonds. So here you can say that organic compounds, you can say C6H12. So if you can say C6H12, so you can say that this is the compound hexane. You can say hexene is containing 6 carbon atoms. This is carbon atoms, 6 carbon atoms. So and 12 hydrogen atoms. So the 12 hydrogen atoms are, I can say this one. You can say this 1H, 1, 2, and this is 3. This is 4, 5, 6. I can say 7. So I can say this is 8, 9, 10, 11, 12. So 1, 2, you can say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So you can say these are the C6H12. So you can say 12 hydrogens. And so the compound must have, you can say this is double bond, which is this one. So we can say at least one double bond. So this is a double bond in this. So you can say option B is correct. So option B is the correct answer. So next one is, which one of the following is an inorganic compound? So you can say that methane, CH4, this is organic compound because it contains carbon and hydrogen. This is also an organic compound containing carbon and hydrogen. And this not contain carbon and hydrogen, so you can say this is the inorganic compound. And this is also, you can say carbon hydrogen, organic compound. So the correct answer is, you can say sodium cyanide is an inorganic compound because it doesn't contain carbon and hydrogen. Next one is, alkyl halide is composed of carbon, halogen and hydrogen and halogens, oxygen, nitrogen, sulfur. So alkyl halide. So you can say the alkyl halide is represented by Rx. So you can say, so R is you can say R is CH3. R is CH3. So and the alkyl halide is composed of carbon, hydrogen. So this is carbon and hydrogens, and also you can say halogens. So this is
This is the halogen. So you can say this is the correct answer, option C. The next one is, which of the following is an alcohol? So you can say CH3OCH3, this is not alcohol. And you can say this is the ether, and CH3CH2OH, this is an alcohol because it contains the functional group OH. So you can say this is the correct answer. While the other one, you can say this is acetic acid, this is the, you can say CH3COH. So this is the aldehyde group, you can say. So the option B is the correct answer. Next one is, unsaturated hydrocarbons are, so you can say this this one, and this is the correct answer. The functional group of ketone is, you can say A, this is this one, B, this one, so C and D. So we can say the correct answer is, the functional group of ketone will be, we can say, so this one is the correct answer, B. So now next one is, a natural gas is mainly composed of methane, C2H5, C2H9 and C2H2. So you can say the one is CH4. Natural gas contains mostly methane. Catenation is the linkage of carbon with other oxygen atoms, carbon atoms, nitrogen atoms, and hydrogen. So you can say catenation is the linkage of carbon with other carbon atoms. Option B is the correct. So finally, the oxygen is attached to on both sides to the carbon atom in. We can say so alcohol, ketone, aldehyde, and ether. So we can say this is the correct answer.